ये है नायग्रा पावर स्टेशन और ये जो मेन बैठे थे थोड़ी देर। हाँ टरबाइन लगी हुई है उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ओल्ड 9 बजे की बस वो उसकी इधर वो सारे वो इन लोगों ने म्यूज़ियम बनाया हुआ जो ओल्ड टरबाइन्स हैं। हाँ। हाँ। नायग्रा पावर स्टेशन। सुनाई वो कह रही थी कि जो टनल है वो 7 PM पे ओपन होगी। अभी क्या टाइम होगा? आधा घंटा है।
water wasn't done changing the face of the planet. When the temperature rose at the end of the Ice Age, and these ice giants began to shrink and retreat to the pole, their meltwater flooded the world. The slow washed away land and created new features. Rivers swelled and dug
water still rushes over the falls, and the ancient power that inspired us to construct the power station still flows through the building. Pools of energy are forming all around you. Step into them. Feel the electricity crackle and flow around you. It's becoming part of you, and you're becoming part of it. Let it direct you around the building. Follow it. Discover how it connects you to one another and to the sacred space. Fill a space, write stories into walls of brick and mortar. Generations of men and women worked here to bring electricity to North America. Look around you and you can see the shadows they've left behind. A century of life and effort, of time spent nurturing the dream of harnessing electricity, lives on in these walls.
planet for over a century lives on every time we flick a light switch, check our phones, fire up our tablets, or cook dinner. Every time we charge our electric vehicles or imagine the innovations of tomorrow, we should think back to this space where the pioneers of hydroelectric power dared to dream bigger than they ever had before. A drop of water. Like the atom, a tiny thing that hides enormous potential. And as one drop of water joins another, and another joins them, they are transformed. They become something bigger. Its millennial flow makes water a colossus, a giant ruling this planet. Its passing writes the story of the landscape. It has shaped valleys, blunted mountains, carved coastlines. Water has a secret heart. It contains the power of movement.
of the Ice Age, with the spirit of generations, as they migrated, settled, and lived nearby. We've watched that powerful flow in awe and wonder. We've seen in it the mystery and complexity of the natural world, and by our curiosity and imagination, we've come to understand the potential it held. Our drive and ambition gave us the challenge of harnessing that potential, of capturing the power of the falls, and transforming it.
वो रिकॉर्डिंग भी कर रही थी। अच्छा हाँ, अब की रिकॉर्डिंग में आ गई हूँ। अब भाभी को ना सारे क्लिप बना बना के भेज दूँगा। कायदे आज़म यार मिल नहीं रहे कायदे आज़म। तुम ना कराची वाले ने कराची का मज़ार देख देख के ना तुम्हारे और कोई चीज़ मिलता जुलता है वैसे बता रहा हूँ। तुम्हारे पाकिस्तान ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान नहीं बनता होगा, पासपोर्ट ना बनता ना कनाडा का वीज़ा लगता तुम्हारा। सही बात है। Construction started on the Niagara Falls Power Station. Alright, in that case, I'll start off with a bit of a timeline. Starting off, our power station was opened on January 2nd, 1905, and remained operational all the way up until 2006. We had to decommission this plant. Why? Well, safety codes are getting a little bit more strict. We were incompatible with the main power grid for about 50 years, and we were highly inefficient as a generating station. So all this contributed to our eventual closing. Out of our front doors here, you're going to see one of our 11 penstocks, which are these 10-foot or roughly 3-meter wide pipes. We transport around 80,000 gallons of water, or roughly 300,000 liters of water, down 136 feet, down to 2 Francis turbines. Those 2 turbines are attached to one of our 11 drive shafts, like one you can see out through your window. The gear deck is just going through control of the volume of water going through the scroll cage directly beneath it, where the 2 turbines are located. As the water spun them at 250 RPM, their speed is applied all out through the drive shaft next to that big blue generator. On the main floor, you pass their way here. After the water is done spinning the generator, it's going to drop into the wheel pit below. We're going down 2,200 feet, roughly 670 meters to the end of the tunnel. Same place you're going to see the falls. You guys enjoy your time there? We have 3 pontoons and an excellent viewing platform at the end of the tunnel. Thank you. Alright, going up. Thank you. ये है टनल। क्या है यार, चीज़ें बनाई हुई हैं है ना। एंटीक को भी जो है ना तफरी बना दी है। वैसे अच्छी खासी बड़ी टनल है और 222 मीटर की है। ये 2200 फीट लंबी टनल है और ये मैं और इधर भी टनल के अंदर से चलते हुए काफ़ी वो डिस्को वाला वो दिया हुआ है इन लोगों ने और साउंड स्पीकर साउंड दिए हुए बैकग्राउंड साउंड और काफ़ी पानी इसमें गहरा है, गिरता है, क्या होता है क्या नहीं होता लेकिन रियलिस्टिक है। जो ये एक्सपीरियंस आप इधर फिज़िकली एंजॉय कर सकते हो वो शायद वीडियोस में और उधर आपको ना मिले। टेम्परेचर बहुत इधर कम है, जो मेंशन किया हुआ था वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड था और थोड़ी फील हो रही है हमें सर्दी और जो स्मेल है वो थोड़ा वेट स्मेल है, सीपेज है काफ़ी और अच्छा है। इस टनल को देखने के लिए आपको तकरीबन 45 to 1 आवर आपको चाहिए होते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं टोरंटो ये नायग्रा फॉल्स विज़िट करने का तो अपना जो स्केड्यूल है वो अकॉर्डिंगली बनाना। काफ़ी लंबी आपको जैसे नज़र आ रही है, थोड़ा डिस्को मूड दे रहा है। तो आपको मैं अब एंड पे दिखाता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी ट्रैवलिंग है और
शायद मैं सारी रिकॉर्ड ना कर पाऊँ। और ये काफ़ी हम चलने के बाद कुछ रोशनी नज़र आई हमें, जहाँ के जो टनल है वो एंड हो रही है और ये फॉल्स की तरफ ओपन हो रही है। वो तो लेने नहीं है। बाहर आ गए। एक साइड ज़र भाई, मेरे ख्याल से अभी हमने सारी चीज़ें देख ली। कोई चीज़ ऐसा रहती नहीं जो कि नायग्रा फॉल से रिलेटेड हो और हमने ना देखी हो। तो ज़र भाई, अभी आपका जो सफ़र था इधर नायग्रा फॉल में, तकरीबन मेरा ज़्यादा करना है, इसके बाद भी एक रेस रह जाए तो करने को तो और भी 2-3 चीज़ करने को तो काफ़ी चीज़ें हैं जो निकल जाएंगी, लेकिन मेन अगर आपने आना है और एक वन डे प्लान करना है तो इसके लिए काफ़ी है इसके लिए। और लेकिन काफ़ी हमने जो इस तरह की अगर करनी है ना, तो आपको अर्ली मॉर्निंग निकलना है, तो इतनी आप कर सकोगे। नहीं तो हम सुबह मैक्सिमम 3 से 4 अट्रैक्शन में आप पूरे हो जाओगे। बिल्कुल, हम 8 बजे इधर सुबह पहुँचे थे और अभी 7 बज रहे हैं और ये हमारी लास्ट अट्रैक्शन है जो हमने प्लान की थी उसके मुताबिक। और देखते हैं इसके बाद हम बस नॉर्मली एक कैजुअल वॉक करेंगे अराउंड नायग्रा फॉल, और फिर हमारी 9 बजे बस है बैक टू टोरंटो। और फिर इंशाल्लाह ये नायग्रा फॉल वाला जो हमारा चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ये आएंगे। लेकिन जो है आज का जो अच्छा हमारा दिन का वो यूटिलाइज हो गया। काफ़ी चीज़ें हमने देखी, काफ़ी चीज़ें सीखी और काफ़ी मज़ा आया। तो ये आप देख रहे हैं नायग्रा फॉल है। All right, let's. Alex, if you do it quick. सबसे ज़्यादा मज़ा आया इस चीज़ का, जो हम थ्योरी में बैठ के और इस नायग्रा फॉल के बिल्कुल करीब है, इसमें हमें काफ़ी मज़ा आया। क्योंकि जो वो मिस्ट थी एक फॉल की, इसने अच्छा हमें बल दिया था और काफ़ी मज़ा आया ठंडी हवाएं की। काफ़ी आगे तक लेके गया था। हाँ, काफ़ी। अब ये जब टर्न करेगा तब ये थोड़ा आगे जाएगा।